Hello and welcome everyone to this ARD live. We'll review the first two matches of the World Cup. कल रात को यूएस और कनाडा का पहला मैच हुआ था और अभी अभी वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी का मैच खत्म हुआ है. सो वेस्ट इंडीज़ का मैच पहले डिस्कस कर लेते हैं. Zed, we can start with you. Uh, if you can give your thoughts on this victory by the West Indies. यार यूएसए वाला मैच मैंने इतना खास देखा नहीं, लेकिन एरन जोन्स ने मैं सुना काफ़ी मारा है कैनेडियन बॉलर्स को. उसके अलावा कनाडा के पास कोई ख़ास नहीं, ऑप्शंस भी नहीं थी बॉलिंग में. उनके जो लीड स्पिनर्स थे साद बिन जफर वगैरह, उनको भी काफ़ी मार पड़ी थी. तो देखिए, उनका टोटल कनाडा का पहले बैटिंग करते हुए अच्छा खासा था. 194 बुरा टोटल तो नहीं होता कहीं भी. कोई थोड़ी बहुत जगह हो, कोई आईपीएल टाइप जगह हो तो फिर वहाँ पे आके हंसेंगे, तो ज़रा कम था ये, या वी लेकिन कैन वैसे मतलब वो यूएस से कनाडा वाला मैच थोड़ा बाद में इन डेप्थ भी डिस्कस कर लेंगे. तो ये वेस्ट इंडीज और पीएनजी का मैच काफी क्लोज रहा है. इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना क्लोज रहेगा. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार पीएनजी ने काफ़ी अच्छा फाइट बैक किया. मेरा तो ख्याल था कि इतना छोटा टोटल है वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो इतना आगे तक जाएगा नहीं मैच, लेकिन आई थिंक इन्होंने काफ़ी अच्छा उसको स्ट्रेच किया. इवन दो जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल सी बात थी इस वेस्ट इंडीज़ 11 के खिलाफ, लेकिन स्टिल आई थिंक दे फॉट बैक रियली वेल और 19th ओवर तक लेके गए, विच इज़ प्रीटी गुड फॉर देम. तो अभी नाला उनके जो कीपर है उसने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी, प्लस के एक दो कैचेस भी थे. और बॉलिंग में वो जो असद वाला और एक दो और स्पिनर्स थे उनके, उन्होंने 4 एंड ओवर 6 के हिसाब से गए थे, जो काफ़ी अच्छा था. हाँ, और गयाना आई गेस probably the most spin friendly pitch in the Caribbean as well. Imad, any observation you would like to make perhaps about the PNG team and how they used their bowlers Yeah, tactically as well? very contrary to Zed. I just think I actually I thought कि जो मुश्किल होगा target 136 का chase करना, because the ball was ticking in the first innings for PNG too. And I think कि जब बाव ने वो innings खेली थी 50 जो मारी थी, or 42 balls, although in normal circumstances that might be seen as a very slow 50 or something in T20s, but in that condition, I think it was a very integral innings played by him, and it was very heartening to see PNG fight like this. And I just think कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने आज स्ट्रगल किया है, they need to be really wary of Afghanistan. And that match is in St. Lucia, but still I think their spinners would come in really handy against West Indies batters. Absolutely. And another factor is that in this group you have West Indies, New Zealand and Afghanistan together. तो इन तीनों में से एक टीम नॉकआउट हो जाएगी. और if you'd asked me without looking at the group stage सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे, तो probably मैं कह देता कि अफगानिस्तान कैरेबियन में खेल रहे हैं, यूएसए में नहीं खेल रहे, तो दे डू हैव अ चांस टू मेकिंग द सेमीज. लेकिन ये ग्रुप स्टेज भी ऐसे ही है कि दे probably could get knocked out अगर न्यूजीलैंड से हार जाएं. तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो अनदर एक्साइटिंग फैक्टर कि ये 2007 टाइप फॉर्मेट है जिसमें एक मैच में भी स्लिप अप हो जाए तो यू कैन गेट नॉकड आउट. How do you guys feel about the Hetmeyer's Hetmeyer not being in the 11 for West Indies? हाँ, आई गेस उन्होंने यही डिसीजन लिया कि चेज और निक पूरन को ऊपर टॉप 4 में रखना है. तो देन यू कम डाउन टू 5, 6 and 7. तो पावल एंड रसल आर लाइक ऑटोमेटिक सिलेक्शंस. और फिर यही रहता है कि रदरफोर्ड को खिलाना है या फिर हेटमायर को एज अ लेफ्ट हैंडर इन द at number 5. So I guess they went with the more Hetmeyer, sorry, Rutherford is more of a hitter. I think क्वेटा के लिए भी 6 पे खेला था. और एटमायर इज मोर लाइक समवन, आई थिंक इतना मुझे याद नहीं है. ज़ैद मे बी यू नो कि आईपीएल में वो राजस्थान के लिए किस रॉयल्स के लिए टॉप 5 में था कि नीचे था 6 पे. यार आई थिंक 6 पे खेलता रहा है. एक दो सीजन पहले तो आई रिमेम्बर के राजस्थान के लिए बेसिकली वो एक फिनिशर टाइप रोल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन वो एक
डीप लेके जाने वाला रोल करता था, क्योंकि राजस्थान की बैटिंग काफ़ी लाइक थोड़ी बैटिंग होती है। 6 पे एडमायर था, और मुझे याद है 1-2 सीज़न पहले की बात, तब उस वक़्त 7th पे अश्विन था। तो इसका बेसिकली रोल ये रहा है आईपीएल में, थोड़ा बहुत फिनिश वगैरह करता है, और उसके अलावा जो है वो ज़रा लंबा लेके चलता है, क्योंकि बैटिंग इनकी इतनी डीप नहीं है। लेकिन वैसे हमारा टॉप 5 के तो बाहर ही खेलता है, 6 या मे बी कभी-कभार 7 भी। हाँ, आई गेस फिर अगर नंबर 6 का ही चूज़ करना था, आई वुड गो विद रदरफोर्ड टू, क्योंकि व्हेन यू हैव चेज़ देयर एज़ लाइक द एंकर कह सकते हैं, देन you do need to like have more a more aggressive option in down at number 6. And the first coming to the first match of the World Cup, which was USA versus I Canada, it think it was was more sort of yeah. about the loyalty factor too, also because Hetmeyer has had issues with the West Indies board in the past too. I'm sorry if I Uh, interrupted or interrupted. no, I no, didn't realize that you were speaking. no worries. I think 22 में he got dropped from the World Cup at the last minute. Yeah, if I remember correctly. So हाँ, प्लस Andy हेटमायर Bosman. का आई डोंट थिंक आईपीएल भी कोई बहुत अच्छा गया था, लाइक काफ़ी लाइक एवरेज सा आईपीएल था इस साल। Okay, and coming to like the PNG bowlers, I think they utilized the conditions perfectly, really, क्योंकि they kept it tight. और आई थिंक आखिरी डेथ में ऑब्वियसली थोड़ी लूज बॉलिंग करा दी, बट इट वाज आल्सो लाइक एन अनफेवरेबल मैचअप विद एन ऑफी अगेंस्ट रसल, लेकिन आई थिंक दे बोल्ड रियली एज वेल एज दे कुड हैव। आई थिंक इधर शायद 20 रन्स और बना लेते तो इट वुड हैव बीन लाइक अ रियली टाइट गेम। एनी थॉट्स ऑन दैट? I think another factor about PNG is कि like it shows कि how open T20 format is and how this format gives opportunities to various teams around the world which we won't see in ODIs or Test cricket at all. And so I think we are in for a lot of surprises as well in this tournament and a lot of upsets too. Yeah, definitely. And coming to the, unless you guys have any thoughts to add about this match, we can go to the USA Canada one. And yeah, I watched it live, like the whole match, or I was expecting कि you know दूसरी innings में शुरू Not से ही बहुत ही chasing really. friendly conditions होंगे, with maybe dew or chasing under lights in a small ground. लेकिन दूसरी innings में ये मैंने observe किया कि at the start under lights in Dallas where we'll play the USA, it was swinging and seaming quite a lot. I think Aaron Gordon ने काफ़ी अच्छी spell कराई थी power play में, और पहली इनिंग्स में it was it started at around 7:30, was still not dark, the floodlights were still not on. तो पहली इनिंग्स में it looked like a belter, like a 250 pitch really. I think Canada really fell short. आउटफील्ड भी बहुत ही फास्ट थी. So I think the USA bowled quite well. They got breakthroughs at the right times, and as it proved, like in the second innings, I mean, falling short in the first innings is a core problem with Pakistan. exactly, and that was the connection I wanted to draw. क्योंकि इधर हमने भी USA से खेलना है, और स्पिनर्स हमारे इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, पर एरन जोन्स के सो probably his best sixes are off the slog sweep against spinners. तो अगर इधर बैटिंग फर्स्ट हम कर लें, आई थिंक यू हैव टू एम फॉर 200 प्लस डेफिनेटली. यह प्लस उसके अलावा जो पाकिस्तान के लाइक स्पिनर्स हैं, हमेशा शादाब स्पेशली जोन्स ने लेग स्पिन के खिलाफ काफ़ी अच्छी बैटिंग की है कैनेडियन स्पिनर्स के अलावा। शादाब की काफ़ी बुरी फॉर्म चल रही है, तो ये काफ़ी वो होगा, इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। हाँ डेफिनेटली, एंड आई थिंक इधर अगर पहले बैटिंग हमारी आ Yeah, भी जाती है. and yeah, या USA हाँ, is gonna give us hell, honestly. Especially, I'm sorry, you can go. yeah, I think like if you bat first, obviously 200 plus तो बनाना ही है, लेकिन the way Aaron Gordon bowled in that power play, I think it's really instructive about how crucial the power play will be for Pakistan if bowl under lights. Obviously Shaheen तो है ही,
एंड आई थिंक अगर इधर दूसरा न्यू बॉल पेसर you have to choose between Naseem and Amir, I would definitely go with Naseem looking at the swing and seam. And I think one question I have, like in looking at the conditions in Dallas, would you go with four pacers या extra spinner खिलाना चाहिए? यार आई थिंक एक्स्ट्रा पेसर के साथ ही जाना चाहिए। स्पिनर्स का एक तो लाइक फॉर्म का मसला है, दूसरा अब्रार इतना ट्राई आउट नहीं किया हमने। प्लस आई थिंक वेस्ट इंडीज के लिए ज़्यादा सूटेबल है कि हम अब्रार को या शादाब इमाद तीनों को, या बेसिकली स्पिन है भी अगर जाना तो आई थिंक कैरिबियन के लिहाज से ज़्यादा सूटेबल है। यूएसए में आई थिंक इट वुड बी बेटर कि अगर हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएं। किस्सा का कमेंट आया, यूएसए हमें हरा ही ना दे भाई। आई थिंक रियलिस्टिक है ये, it's a realistic like prediction to be honest. And yeah, another thing I read in the Crick Info preview also was like USA versus Canada is Dallas, like the man, if they oldest international like, rivalry. it's Yeah, like I think they played in 1844 in the first ever international. I mean, like officially international उसको नहीं मानते. And yeah, I think the atmosphere also was pretty great. You saw all the South Asian fans in the stands supporting the USA. और स्टेडियम भी काफ़ी फुल था, आई थिंक 80% फुल था, डिस्पाइट लाइक ICC doing a terrible job with marketing and everything. And yeah, it was like watching it live was really like a great atmosphere, to be honest. So I hope like obviously Pakistan fans to hongi um, in the match against USA, but I hope like USA also gets some local support as well. Okay, coming to the next match, which is South Africa versus Sri Lanka, वो न्यूयॉर्क में हो रहा है. तो अगर इंडिया वाला वार्म अप देख लें अगेंस्ट बांग्लादेश न्यूयॉर्क में, हाउ वुड यू लाइक assess the pitch and conditions there, Zaid? यार मैं वही कहने लगा था कि ये गेम जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया फैंस के ज़रा एक तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूयॉर्क की कंडीशंस के बारे में आपको लाइक एक लुक मिल जाती है कि न्यूयॉर्क की कंडीशंस कैसी हैं। ये भी, और आई थिंक एक आधी और भी गेम है अभी, इंडिया आयरलैंड की गेम है न्यूयॉर्क में शायद, और पाकिस्तान की भी इसके बाद एक गेम है। तो आई थिंक ये गेम इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तानी और इंडियन फैंस के लिए। और अगर दोनों टीम्स की प्रिडिक्टेड 11 की तरफ देखें, सो आई थिंक रबाडा को थोड़ी इंजरी हुई थी IPL में, सो ही माइट मिस आउट. नहीं, वो लाइक अवेलेबल है इस मैच के लिए फिर भी। Okay, so I guess South Africa will go with one of Rabada और Norkia, या दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं? What do you think? आई थिंक खाली महाराज जो है वो महाराज विल बी द सोल स्पिनर, और बाकी कोडजे, यानसन, रबाडा और नोकिया शायद खिलाएं। नोकिया की वैसे रिसेंट फॉर्म कोई हाथ नहीं अच्छी नहीं रही, लेकिन हो सकता है वो बैटरमैन या एक दो और इस तरह के जिनके नए फागर हैं उनको में से किसी को शायद ट्राई करें, हाँ, लेकिन आई थिंक जाएंगे एक वो बार्टमैन है. 4 फागर। हाँ, I think Bartman है. He's also in the likely 11 for Crick Info. I think they have like वो ये कह रहे हैं कि रबाडा और नॉर्किया में से एक ही खेलेगा. And beyond Fortune, like I think he's a left arm spinner वो as a second spinner खेल ले. फोर्टून की जगह आई So थिंक महाराज काफ़ी रेगुलरली खेलते हैं, इनका महाराज इज मोर लाइकली टू स्टार्ट आई थिंक। I guess they could even go with three pacers like Nokia, Rabada, and Bartman with Janssen at 7. And coming towards Sri Lanka, I guess pretty predictable 11 का मतलब काफ़ी stable lineup रही है. You know, you have Nisanka, Mendes, and Samara Vikrama, Salanka like among the batters. और अभी मैं देख रहा था शानका ने एक दो काफ़ी अच्छे नॉक्स खेले हैं वार्म अप के अंदर, और उसके अलावा एक मैच में आई थिंक उसकी 4 विकेट्स भी हैं। उसके अलावा मैथ्यूज का भी डिसेंट फॉर्म रही है, लेकिन मेरा हाल है इन दोनों में से कोई एक ही खेलना चाहिए, दोनों की शायद जगह मुश्किल ही बने।
हाँ, क्योंकि अगर टॉप 5 देख लो, निसांका और मेंडिस ओपन करेंगे, फिर कमिंडू मेंडिस भी है, हम्म। असलंका और समर विक्रमा भी रेगुलर हैं। तो फिर 6, 7, 8 में ही आप अगर मैथ्यूज़ को फिक्स, मतलब मैथ्यूज़ को 6 पे मैथ्यूज खिलाना है, के दैट अलावा दैट डजंट हसरंगा सीम हिज भी, पोजीशन। हसरंगा भी प्रॉब्लली थोड़ा ऊपर बैट करे, 5 या 4 पे बैट कर सकता है। हाँ, सरंगा एज़ अ फ्लोटर इज़ डेफिनिटली एन ऑप्शन। लेकिन ये है कि जितना मैथ्यूज़ को डिमोट करते जाएँगे, आई थिंक like the more of a burden it becomes. It's kind of like more of an anchor at this point, I guess. लेकिन ये हम्म। है कि श्रीलंका की बैटिंग डेप्थ है, दे कैन यूज़ लाइक हसरंगा और शानका एट नंबर 8 अनलेस दे प्ले विद 4 आई थिंक पेसर्स मैंने एक अगर। दो मैच में वैसे शायद क्या कहते हैं, तीक्षणा को भी बैटिंग करते हैं थोड़ी बहुत देखा है। बोलते किसी पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी मैच में उसने थोड़े बहुत रन किए थे। आई थिंक एशिया कप था, पता नहीं कौन सा मैच था। प्लस उसके हाँ, अलावा आई गेस। साउथ अफ्रीका का हम्म। हाँ, एक चॉइस मतलब ये उनको करनी पड़ेगी कि अगर 3 बॉलर फिट करने हैं 9, 10, 11 पे, हाँ, तो मधुशंका, चमीरा और पथिराना में से कौन किसको ड्रॉप करना है, या फिर मेरा हाल तीक्षाना है को ड्रॉप चमीरा करना है। प्रॉब्ली ड्रॉप होगा। ये मधुशंका का वो लेफ्ट आर्म वाला सीन भी है, तो आई थिंक वो मधुशंका को हुँ। प्रेफर करेंगे। हाँ, आई गेस और मधुशंका पथिराना की और रेस्लिंग। थेक्शाना के साथ हाँ। ओपन कर लें, एंड देन पथिराना कैन बी लाइक द डेथ ओवर्स बॉलर। हाँ। तो अ, ऑ ऑब्वियसली। लेकिन ये भी है कि साउथ अफ्रीका का मिडल ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, और स्पिन के खिलाफ खास तौर पे लाइक मार्करम और स्पेशली क्लासन। क्लासन आई थिंक इस वक्त क्लासन से बेहतर शायद ही कोई हो स्पिन हिटर इस दुनिया में। तो ये भी है कि आई थिंक हासरंगा, थिक्शना और वो धनंजय de सिल्वा अगर खेल रहे हैं वो इन दिनों के खिलाफ जो है लाइक क्लासन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंड हू डू यू थिंक द कंडीशंस विल फेवर मोर, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका? अगर पिच सिमिलर होती है, यार वार्म अप भी सिमिलर। आई थिंक क्योंकि इतना स्पिन फ्रेंडली नहीं होगा तो मे बी साउथ अफ्रीका। हाँ, आई I वुड एग्री। probably Sri Lanka, I guess, because of their spinners. But again, we have the South Africa के batters भी जो हैं काफी ज़्यादा spin को अच्छा खेलते हैं. So I think it's quite an even matchup if you look at it. हाँ, quite even. And I think when you consider maybe death bowling, I would probably put Sri Lanka slightly ahead. Like, I don't know if you guys disagree. हाँ, वैसे डेथ बॉलिंग में श्रीलंका को थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा पथिराना का खास तौर पर, क्योंकि साउथ अफ्रीकन में आई डोंट थिंक यानसन और कोडजे कोडजे आई थिंक फिर भी बेहतर है। यानसन आई डोंट नो कि लाइक कितना कुछ डेथ बॉलर्स हैं बाकी। So I think Jansen is sort of it will better with be. the new ball. Jansen to new ball bowler, yeah. I think it will be quite an even contest. I think it will be like closer than people expect. Like usually South Africa, Sri Lanka अगर ये pick वैसे करना हो तो है 90% किस South ग्राउंड पे? Africa pick करेंगे. न्यूयॉर्क में. So like we have the India Bangladesh game to like consider for the conditions. Or one question I have is like West Indies or PNG का match started at like 10:30 a.m. local. Obviously इसलिए कि सब कॉन्टिनेंट के फैंस शाम को ट्यून इन कर लें. So do you think like that's a good approach, or like does it penalize the local fans too much, Imad? I just think 2 hours late जो start कर सकते हैं games को, like 9:30 would be feasible for subcontinent fans as far as I feel. I mean they have to compromise it a little, but थोड़ा सा I think they should be considering the local audiences too. And I think maybe at 12:30 start or in 11:30 start in terms of Caribbean might actually bring in some fans in the stadium, especially on the weekends. हाँ, आई एग्री, क्योंकि obviously commercial factors भी sadly देखने ही पड़ते हैं. That's the system we live in. लेकिन It's sort of more 10:30 about the seems cost excessive. benefit analysis. Yeah, definitely. It's sort of more लेकिन about the हाँ, cost ये I benefit agree analysis. You definitely have to कि see किसमें जो like
Definitely on the weekends you can start at like 12:30. It's not, I think, a big deal. Like अगर आपने वेस्ट इंडीज वर्सेस पीएनजी देखना है साउथ साउथ एशिया में रहते हुए, तो कितना फर्क तो नहीं पड़ेगा कि 7:30 या 9:30 हो. I mean, it's not like it's some game that it will make a big difference. And yeah, like I see the Other poll than results that, here. Yeah, go ahead. yeah, the thing is कि I think वो tournaments में शायद time same रखना चाहते हैं. Even if you look at football or even other sports, वो probably time जो match starting में same रखना चाहते हैं, irrespective कौन सा match है. So शायद इसलिए भी maybe they're starting these West Indies PNG type of games early at 7:30. हाँ, obviously broadcasters ने तो fixed slots ही मतलब decide किए होंगे, so you can't really like Yeah. tinker with them too much. Okay, that poll में like 67% are worried for Pakistan after USA beat Canada. Like, do you share that feeling I or think that's pretty ज़्यादा थोड़ा optimistic हो? I think that's pretty low in terms of the paranoia Pakistan fans tend to have. I'm not going to blame them. But yeah, after the first game, the way USA played against Canada, especially Aaron Jones, and actually they bowled pretty well. It was a 220 pitch, and they restricted Canada to some extent. And they have some sort of experience in the dressing room as well as in Corey Anderson. So I just think ये 20 USA पिच तो will था, लेकिन cause a lot of हमारे trouble. फैंस ने कहेंगे कि उधर 190 बना था, तो 190 पिच है. So yeah, I think I definitely would be worried for Pakistan agar like we have to bat first. I Yeah, think that's pretty and obvious. इसमें Yeah, I can hear you. Go ahead. I can hear you too. Is there anything else that we have to discuss? Yeah, so I wanted to come to your prediction for like South Africa versus Sri Lanka. Like if you had to pick one. And the That's best player, actually a who very do you think difficult like will be the one. most impactful player? Uh, my fantasy 11 would sort of influence me to say Henrik Klassen for uh, for the for the match winner, but I just feel like it's going to be Sri Lanka causing uh, and not an upset, but it will sort of bring some A earthquake surprise. in that group, and yeah, you can call it a surprise, and maybe I see Sri Lanka performing really well with the bat. I think I will go with South Africa. I think their choking stage वो थोड़ा बाद में आता है. अभी शुरू में तो I think ठीक ही खेल लेंगे. And I agree. I would go with Klassen as the match winner for this match. Yeah, Yeah, I think that's pretty much it for today. Obviously, we should be back um, perhaps tomorrow after both matches have concluded. Or I think it's one match. I think it's just this one. And thank or you to pretty everyone soon. for That's an ambiguous thing to say. pretty soon. So thank you for everyone who tuned in, and hope you enjoyed. And we'll see you pretty soon.